हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। थोड़ी देर वेट करते हैं जिससे लोग हमें जॉइन करें और जो लोग हमें जॉइन कर रहे हैं प्लीज ड्रॉप अस अ हाय इन द कमेंट्स सो दैट आई नो दैट यू आर देयर। Oh good, I can see a lot of people joining. Okay guys, keep dropping us a hi in the comment section. It'll be good to see you there. Good afternoon everyone, I hope you're having a good day. गाइज वंस अगेन वेलकम टू इंडियाबुल सिक्योरिटीज। मैं हूं आंचल पाठक और आज के वेबिनार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल मंथली एक्सपायरी का दिन है, तो आपको क्या क्या बातें इसके रिगार्ड में ध्यान में रखनी चाहिए, क्या सेटअप होना चाहिए, वो सब डिस्कस करेंगे। इसी डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर राजेश श्रीवास्तवा, जो कि क्वांटलैब के फाउंडर है। पिछले 22 सालों से ये ट्रेड करते आ रहे हैं, एक एक्सपर्ट ऑप्शंस और एल्गो ट्रेडर हैं। सो इनकी बात आप जरूर सुनिएगा। मिस्टर श्रीवास्तवा, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। हाउ आर यू डूइंग एंड हाउ आर द मार्केट्स? जो आपका एक Good evening, स्टैंडर्ड Atul क्वेश्चन ji. होता है। Good evening, everyone. I'm doing good. Yeah, the markets are good for the last 2 days, okay? But remember, just expiry related move, and then we are getting up for the large event, big event next week, okay? So, but Right. anyway, good move on the mid cap and a lot of beaten down stocks. So overall, yeah, good end of the day. There was one volatility. I'm sure our viewers would have had some sort of problem with that, but then yeah, the day ended up very well. Yeah. So Right. good. Yeah. कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, कुछ लोग हाय बोल रहे हैं। हाय मिस्टर माथुर, हाय Perfect. मिस्टर विष्णु। गाइस जैसे जैसे आप ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज कीप ड्रॉपिंग अ हाय। अगर इस सेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मिस्टर श्रीवास्तवा इज हियर टू टेक अप ऑल योर क्वेरीज। एंड मिस्टर श्रीवास्तवा, लाइक वी मेंशन, कल मंथली एक्सपायरी है। फिर फेड की मीटिंग भी आने वाली है और बजट है, biggest event of all. So what kind of speculations are there? क्या आउटलुक है फिलहाल अगले कुछ दिनों का, क्या बोलना चाहेंगे आप? पहली बात, ये कल मंथली एक्सपायरी है, तो द I mean it is important event, okay, for us. Yes, we have Fed event, I think tonight 10 p.m. something. Okay, so yeah, a lot of event around, and then next week is the budget. So and this is visible. I mean, if I have to speak about option pricing, we have about 300 रुपया. अब अगर याद करो, लास्ट वीक हम लोग जब इस पे बात कर रहे थे तो 150 रुपए का प्रीमियम था एंड 90 पे ओपन हुआ था अगले सुबह. सो वी हैव 300 रुपीस प्रीमियम टुडे. ओके, सो ऑल द वोलेटिलिटी इज ऑलरेडी विजिबल ऑन द ऑप्शन प्राइस. ओके, कल क्या है? कल, आई मीन, ओके, लेट मी पुट इट दिस वे. So we found, I mean, we thought to check, okay, how many times the Nifty or Bank Nifty move more than 300 point post 2 p.m. Okay, and this, the whole purpose to find this was figure out hero zero कब मिलता है, कौन सा opportunity है. So we found 13 weeks out of the 52 weeks where we have used volatility post 2 p.m. to 30 p.m. And what was common in this 13 week is 8 times that has fallen on a month end expiry. Now, this expiry, if you go back and check, we have Nifty, we have Bank Nifty, we have Fin Nifty, we have Mid Cap Nifty, we have Fin Nifty 50 expiry. All expiries are clubbed together. Okay, so yeah, जब एक single expiry होता था तो काफी volatility हुआ करती थी. अब let's see how the club thing goes on. But if I go back and see the opportunity of the hero zero what we have traded, and it's not a recommendation. So month end are the one where it is the most of the time we have seen huge volatility post 2 p.m. So कल month end है. Right, lots going on. And क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए कल ट्रेडर को, कुछ बता सकते हैं? क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ट्रेडर को? आशल जी, नाउ दैट वी आर डूइंग दिस
every weekend. So what I have done, I have prepared a format where our people can have a checklist, kind of go check and then proceed. So what I'll do, I'm putting up my screen on the sharing. I have a very small checklist. I don't want to bore with my presentation. So एक Right. छोटा चेकलिस्ट है मेरे पास, देखते हैं क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए. So here is the checklist for tomorrow. Just 3 slides है. पहला sentiment and signals. Actually, there is a question from Kushal sir. Am I audible now, Kushal sir? Actually, there is a question from Kushal sir. एक बार आप देख लो Yes, ना. he's just asking you to speak a little louder, Louder. if Kushal that's sir, possible. I have just, yeah. Am I audible now? Mr. Kaushal, if you can hear Mr. Rajesh properly, do let us know in the comments. ओके कुशाल जी, बता देना हमें. तो पहला तो सिग्नल्स काफी मिक्स्ड है. एंड व्हाई एम आई सेइंग मिक्स्ड सिग्नल? एक आप देखो, वी थ्रू आउट द मंथ वी हैड स्ट्रगल्ड विद द bearish tone, and then suddenly all of a sudden we have seen 2 days of good pullback. Okay, and then data also. Why I'm saying data also? Let's see open interest and volume. So the max volume is around 23,100. So the all the action is around that level. Most of the time we have seen wherever there is a max volume, the market does the action around that. So for now, when we close today, 23,100 के आसपास पूरा वॉल्यूम था. ओपन इंटरेस्ट काफी इंटरेस्टिंग है, पता है. कॉल में 23,000 पे है, फिर सीधा 23,500 पे है. पुट में 22,800 पे है. तो कॉल साइड थोड़ा थोड़ा ज्यादा हमारे को नेक्स्ट लेवल दिख रहा है ऑफ द ओआई, बट पुट साइड इज जस्ट 200 पॉइंट फ्रॉम हियर. ओके, व्हिच आई फील विल चेंज एज द मार्केट ओपन टुमारो मॉर्निंग. तो क्या ध्यान रखना चाहिए, हमारा वॉल्यूम कहाँ पे है, विच टेल्स द एरिया वेयर वी आर लाइकली टू सेटल डाउन और लाइकली द एक्शन टू बी. एंड देन ओपन इंटरेस्ट विच गिव्स अस एन आइडिया अबाउट support or resistance, kind of. Okay, or if it breaches, then the randomness, the madness starts. Okay, तो कॉल में काफी 23,000 पे, फिर उसको 23,500 पे है. Okay, I have written bearish undertone, and this is little experience wise. uh, and why I've written, let me put my chart on the screen. Give me a minute, Asalji. I'll put some chart on the screen so that people get an idea. Yeah. Meanwhile, Yeah. So अगर if you आपके पास see, कोई yeah, shoot a question as well while we are talking. If you see, 1 2 3 4, ये 5 6 7 8, ये 9. So most of the time the monthly candles are either closing on the top or on the bottom. यहाँ पे bottom. ओके, ये एक पुल बैक था. ये टॉप पे बंद हुआ है. ये देखो, टॉप पे बंद हुआ, टॉप पे बंद हुआ, टॉप पे बंद हुआ. So most of the time we have seen monthly candles are closed either at the top or at the bottom. Okay. Now tomorrow we have the monthly expiry. I mean, yeah. So either we go back and hit 24,183, chances are no, or go down 300 point and hit the level where we are today. Okay. So I have taken this, and that is why I said bearish undertone. If you see the throughout the candles, this is monthly candles. Throughout the period, either you have close on the top or on the bottom. Okay. तो उसलिए मैंने इसे एक बेरिश अंडरटोन रखा है. ठीक है. कॉल साइड रेजिस्टेंस, आई मीन, या 300 पॉइंट ऊपर है, पुट साइड भी 300 पॉइंट नीचे है. द लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, implied volatility. Okay. वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. देखो, 300 रुपए का प्रीमियम है. 300 रुपए तो बहुत पैसे हैं एक्सपायरी दिन, कंसिडरिंग द लास्ट 6 महीने का नॉर्मल एवरेज प्रीमियम. तो ऑप्शंस आर रिलेटिवली हायर. ओके. सो कल डीके भी होगा, बहुत तेजी में डीके होगा अगर मार्केट नहीं मूव करता है. लास्ट टाइम वी हैव स्पोकन अबाउट दिस. इफ यू आर अ स्किलफुल ट्रेडर, you can try straddle triangle. And why I'm talking about straddle more, because you get the maximum decay at the fastest pace at the money. OTM में decay speed is lesser, but probabilities of that expiring worthless is more.
ठीक है, तो इस अगेन योर ट्रेडिंग साइकी, योर ट्रेडिंग appetite की रिस्क वर्सेस रिवार्ड. So option price is higher. Your strategy has to decide, what you are going for. If you're going for a status triangle, you may go for a scalping something, or a nice documented or coded strategy. By the way, Indiabull is going to provide those platform also for people to code their strategy with just few drop down. They don't have to really know the coding for that. So I have left some trading strategies, open for tomorrow. So that we'll talk about in coming days. Now, here we are talking about gamma squeeze. So basically, the expiry day dynamics. Okay, and this is mostly on the monthly expiry. एक तो problem है gamma squeeze. That's mostly around 3 p.m. 2:30 p.m. onward. You can see that if you are a seller, you got to be careful. If you are a buyer, that the optimum state for a buyer. थीटा डीके, yes, you get 40 रुपया अभी अगर के अंदर और 40 मिनट के अंदर मार्केट नहीं मूव किया तो पूरा डीके हो जाता है. तो फॉर द एक्सपायरी डे, theta decay is the most important thing one has to consider. And then remember, this is the month end, so there is a rollover, position rollover will be happen. So I've seen, whenever there is a big huge volatility, like even if you see today 100 point we have fallen and then quickly recover 100 point, so those are the time when the rollovers are taking place, the large players are rolling over their positions. Okay, so tomorrow we have that problem. So all this will come back to the price movement inflation, fluctuation. Okay, so what is the dynamic of tomorrow? These three things one has to keep in mind if they are into an active position. Okay, ये रोल ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है. एक मिनट में 300 पॉइंट भी गिर सकता है और पुल बैक हो सकता है क्योंकि रोल ओवर चल रहा होता है. ठीक है, तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर टुमारो. So there are many, straddle triangles. If so, again, straddle have a higher decay rate. 300 रुपए का प्रीमियम है. अगर बाजार आधे घंटे भी कुछ नहीं हुआ ना तो वो फट से 200 रुपए के अंदर आ जाएगा. ठीक है, बट रिमेंबर, if market moves, the IV impact is max on the ATM compared to far OTMs. far OTM में decay नहीं है, पर उसका worthless होने का possibilities बहुत ज्यादा होता है. So again, which strategy should you select on the pure decay perspective is, your risk appetite. Hedging. So there are a lot of people having added put in the last calls of future in the last 2 days. तो थोड़ा सा हेज करना जरूरी होता है क्योंकि ये बड़ा इवेंट होता है. हम ऐसे भी बहुत बड़े इवेंट के लिए जा रहे हैं. एंड if you wanted to go for a risk defined strategy, you can try a great spread, iron condor or a butterfly or something like that. Okay, so strategies for tomorrow is this, because we have a lot of premium on the options. But again, coming back, so many questions here. A lot of people saying hi to you. So people are very happy to see you. No, people are happy, but I have okay, someone love. Okay, so कल के लिए it's an important day इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मंथली एक्सपायरी है. So that's all. So this is the format we're going to use even future. People wanted to add something to this format, I'll be more than happy to add. And yes, of course, based on your questions, I have built this. So if you continue to ask questions, I'll continue to build my format for discussing on every expiry eve. Okay. So actually, this is what I had prepared from my side for the people to plan tomorrow. Right. I'll be like we have another 15 minutes or little less than 15 minutes for the Q&A. So let's go for that. Yes, definitely. जो भी हमारी ऑडियंस को अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए. एंड सेकेंडली, जैसे मिस्टर राजेश ने बोला है, कोई फीडबैक है, अगर कोई डेटा है जो आप जानना चाहते हैं हर मंडे और वेडनेसडे प्रायर टू द एक्सपायरी, सो प्लीज डू लेट अस नो. वी विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट इन द प्रेजेंटेशन जो मिस्टर श्रीवास्तवा ने फिलहाल दिखाई है. Mr. Srivastava, the month is about to end, first month of the year. Any observations? क्या बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, पहला महीना कैसा रहा है मार्केट्स के लिए और डेरिवेटिव्स ट्रेडर्स के लिए? So देखो, थोड़ा सा if you are a derivative trader, you must have made decent money in the sorting options, sorting market. But there are a few days when we have seen decent 200 point pullback or like today, तो उसमें भी थोड़ा ट्रबल हो रहे हैं. पर ओवरऑल डेरिवेटिव ट्रेडर्स के लिए it's a decent month.
राइट, दैट्स गुड टू नो। और मैं अपने व्यूअर्स को याद दिला दूं कि ये जो वीडियोस हैं वो फिलहाल लाइव खत्म होने के बाद आप फिर से देख सकते हैं यूट्यूब पर। एंड सेकेंडली, एवरी मंडे एंड वेडनेसडे मिस्टर श्रीवास्तवा सेंसेक्स एक्सपायरी और निफ्टी एक्सपायरी डिस्कस करने के लिए हर हफ्ते आपको मिलेंगे यहाँ पर। सो अगर आपको कोई क्वेश्चंस सेशन एंड करने के बाद भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम मॉनिटर करेंगे एंड वी विल टेक इट अप इन द नेक्स्ट सेशन. Mr. Ashwin Modi has a question. Which sector will be bullish after Yeah, so budget? Ashwinji, and let me answer this. So for the budget and even post-budget, Indiabulls has planned something bigger, and I mean at large scale, right? So there will be experts taking your questions on the sectors and then sector specific stocks. So आप बजट वाले इवेंट को ज्वाइन करो वो सैटरडे. Achal ji, what time you are starting? I think Achal ji has the large better detail about that. So yeah. 11 a.m. onwards you're starting. The show is called Budget Pulse. It's a live. एक के बाद एक different experts आएंगे after the budget और वो बात करेंगे. Mr. Srivastava is one of them. अगर आप हमारे social media channels को follow करें तो आपको सारी information regarding this event मिल जाएगी. Meanwhile, Mr. Jagan Mohan is asking, is it the right time to invest in small shares? जगन, आप इतना दिन रुक गया, बजट भी रुकी जाओ. क्योंकि बड़ा इवेंट है ना. अभी देखो, यू कैन बी डेयर डेविल एंड डू दैट, बट देन जब इतना हम रुक गए हैं तो थोड़ा एक बड़ा इवेंट है, ऐसे ओसी ऑफ द इवेंट बोलते हैं, तो रुक जाते हैं सब दिन, फिर देखा जाएगा, है ना. Right. सर व्हेन वी हैव टू बाय कॉल और पुट. अनिल यादव जी, ये तो क्वेश्चन देखो, दो चीज होता है. एक होता है डायरेक्शन सिलेक्शन, दूसरा होता है ट्रिगर पॉइंट. तो और बैंकिंग की भाषा में मेकर और चिकर बोलते हैं. तो वो आपको आपके सेटअप में होना चाहिए कि कौन सा डायरेक्शन का ट्रेड लेना है और कब लेना है. ये हम किसी न किसी वेबिनार में अपन इस पे बात करेंगे कि हाउ डू यू फाइंड आउट द डायरेक्शन, हाउ डू वी फाइंड आउट द टाइम व्हेन यू शुड गेट इट. लाइक मैंने बुलिश डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर लिया, बट शुड वी गेट इनटू एट 9:15 और शुड वी वेट फॉर द सिग्नल टू गेट द सेकंड लेवल ऑफ कंफर्मेशन. तो yeah, you need to have. If you don't have also, that's okay. In some of the webinar we'll talk about this thing. Okay, so yeah. Right. We will wait for more questions. Mohan Parker also has a question for you. Yeah, so देखो आप कल आप जा रहे हो ऑप्शन डीके खाने, राइट. 100 रुपये हायर, when a higher option you go for eating the decay, the excess premium onto that. So you trade tomorrow's only, okay, not the monthly. तो मार्केट जी एक्चुअली बहुत है, 300 रुपये का प्रीमियम. अगर आप लास्ट वेडनेसडे हमारे को ज्वाइन किए होते तो 210 रुपये का प्रीमियम था. आई थिंक वी ओपन एट 90 रुपीज, नॉट इवन 210. वी ओपन एट 90 रुपीज, 95 रुपीज. सो टू मच ऑफ प्रीमियम ऑन T-1. Right, we are waiting for more questions. So please अपने जो भी questions हैं वो drop कर दीजिए comment section में and we will definitely take them up. Yeah. So we have made a format to cover the plan for tomorrow, every expiry. But अगर आपके कुछ और भी questions हैं तो we will add it to our format and then we'll actually discuss every time where we have an expiry. Right, जो भी feedback है वो please comment section में डाल दीजिए and we will take it up. कुछ मिस्टर श्रीवास्तव आपको कुछ एंजाइटी हो रही है अगले 2-3 दिनों के लिए, और इज इट ऑल काम Definitely, कूल? Atal ji, नहीं बहुत बहुत एंजाइटी है. and I'll tell you, there are strategies like event based strategies हैं, तो we are actually preparing ourselves to get into those strategies. But yes, it's a big day. I mean, there is no bigger day than this. Okay, we had election result this year and everybody messed up their strategy. I particularly messed up my strategy that day because we never expected the market to go down such large move and then recover fully next 3 days. So anxieties बहुत है. You never know. And the kind of market, see, heading to a budget in a normal scenario or heading to a budget where we have a such steep FII selling or having two different True. what you call thought in the mind. अगर आप एक नॉर्मल मार्केट सिनेरियो में बजट के लिए जा रहे हो, ठीक है, चलो देखा जाएगा जो हो जाएगा. बट यहाँ तो काफी स्टिप सेलिंग हुआ है. व्हाट हैपन इफ समथिंग गुड, they may go all in and buy everything. So then we have a huge volatility on the upside. See, the problem for option trader is it's not at full side or bear side. It's like bigger volatility. Okay.
So we need to manage that case also. So let's see how the budget comes in. I mean, of course, budget is the important event not only for market, for our daily life. So वो तो हम डील करेंगे ही, बट फिलहाल when we, this is our bread and butter, so when we are into this, we'll have to deal with all the all sincerity and all the professionalism there. There are quite a few questions. मोहन बारकर जी, रोल ओवर करना पड़ेगा ना, कल नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? कल रोल ओवर कर लेना. Rahman Ansari ji, what is the right time to average a portfolio? See, I don't know what is your portfolio. I don't know which stocks you have. I don't know how it is. So I would say take an advice from a registered, advisor, and then you take the call. Okay. So yeah, yeah. Hello. Right. Mr. Rahman Ansari is asking any strategy for budget day. Yeah, so we have discussed in the last webinar. You can pull out that. So we have discussed in last, and also on the budget day before the whole budget starts, we have planned to share a couple of strategies. But Ansari ji, let me tell this way: if you are an option buyer and have a view, then you can try, a track or strip. These are the strategies for a directional view. Non-directional on the budget day kind of session is little risky, but yes, there are strategies where you buy, ATM and hedge the wing. So वो सभी हम बजट दे के मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे. तो आप दोबारा आओ बजट दे के सुबह हमारे चैनल पे and we will discuss that. Okay. No Anil Any ji, other Yadav ji, questions? no hero zero. No hero zero. That's speculation. Sure. Or any other questions, please drop it in the comment section, please. Okay, Mr. Rahman Ansari is thanking you. Thank you so much to everyone for joining us and being so active today and asking so many questions. Yeah. So today, yeah, we have a lot of people having a lot of questions. Yeah, so do join us on the budget morning. I mean, we have a whole lot of panel coming in. We'll be talking about the strategy you can deploy, the option strategies, the budget related, fine prints. There are experts, okay, who can talk. Yeah, So there do are join quite us. a few things happening, so you can join us there definitely. Meanwhile, अभी के सेशन के लिए जो questions हैं आपके पास, please comment section में डाल दीजिए so that we can take those up. Yeah. So again, it's a monthly expiry. It's not the normal weekly where we, go ahead and do the straddle triangle and buy at 5% off. कल मत करना, कल बहुत बड़ा volatility हो सकता है. True. Mr. Mohan Parker is saying happy budget to everyone. Oh yes, happy New too. Mohan Parker ji, you too. I mean, for a trader, there are few events which have impact, like RBI policy, budget day, election results, some important state election results, and the board meetings of few large corporates, because they define the whole market sentiment, they define the whole economic sentiment. So for a trader, events are important thing to track, to trade. Okay, and देखो, आप सोचो आपको 300 रुपए मिल रहे हैं, अभी आप 5 दिन दूर या 4 दिन दूर तो हो बजट से. सोचो बजट वाले दिन कितना प्रीमियम रहेगा. एंड इट्स नॉट इजी टू गो एंड ईट ऑल द प्रीमियम. देयर इज अ रिस्क, बट देन it's an opportunity. I mean, you have two way. Either you say I don't want to get into this and stay side, I'm absolutely okay. That's your risk profile. But if you are a active trader, if it is a bread and butter, you have to find a strategy to deal with that. Mr. Mohan is asking, will you continue in this channel day to day? So, Mr. Mohan, let me tell you that every Monday or Wednesday you can join us for discussion on Sensex and Nifty expiry. Mr. Srivastava will be here. और आप एक बार फिर से उनसे questions पूछ सकते हैं. So on the eve of every expiry, we come here and discuss about the plan, how does the market look like, the outlook, the dynamics, and then the cautions for the trade. Okay, so we'll be here for another 5 minutes. अगर आपके कोई questions हो तो please comment section में drop कर दीजिए and we will definitely take them up. Yes, we have a lot of important events, by the way.
Yes, there's a lot happening. काफी कुछ है इस हफ्ते और अगले हफ्ते भी. Yeah. By the way, I don't know people have seen this or not. While we are talking now, the natural gas is down 12%. Wow. Yeah. Mr. So we Papa, we have. can't give any advice on any specific stock or future or anything. So it's up to you to decide that. ये जो सेशन है वो प्योरली इंफॉर्मेशन बेस्ड है यहाँ से Yeah. एंड एजुकेशन बेस्ड है यहाँ से आप एजुकेशन लीजिए और अपने आप फिर स्टडी कीजिए और अप्लाई कीजिए अपने ट्रेड्स में. मिस्टर स्वपन कुमार, आपको कुछ इंडिया बुल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है? वी विल आस्क आवर कस्टमर केयर टू गेट इन टच विद यू रिगार्डिंग दैट. Yes. Yeah. So, and good that you chose the opportunity to actually ask this question, so people know they can approach you. Okay, guys, any other questions? Do let us know. हम कुछ ही मिनट्स के लिए यहाँ पर हैं. Mr. Srivastava can still take your questions. We are not discussing any targets. We are not discussing any specific stock या किसी specific stock का outlook. हम इस इन sessions में नहीं discuss करने वाले. तो please keep that in mind. Yeah. HCL future, what's your view? मोहन जी, मैं stock related बातें यहाँ पर नहीं करते. So we can just okay. So let's do this. Sometime we'll talk about the data. We'll not say bullish or bearish. We'll say what the data looks like. Okay, not on this expiry related, YouTube live. We'll have some learning sessions planned on the totally weekends. Okay, so we'll come and then we'll talk about data. So you earlier Right. asked to do your own research. Okay, so I think those are all the questions that we have as of now. We will definitely catch you soon. Thank you so much to our entire audience for joining us today. Thank you so much, Mr. Srivastava. And we will definitely catch you soon. हमारे वेबिनार्स के बारे में जानने के लिए हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को ज़रूर फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर, फेसबुक एंड लिंक्डइन @IndiaBullSec and we will definitely see you soon. Thank you so much for joining us. Okay, सपन कुमार जी, आपको मैं हेल्प करता हूँ. आप ट्विटर पे जाके इधर इंडिया बुल्स को या मुझे जस्ट हाई ड्रॉप कर दो and then somebody will contact you on your mobile number. So you can go to the Twitter and see India Bull. This particular event, is there, information is there. So go and bid for that. Okay. Okay. Thank you so much, everyone. Thank you. Bye.